YouTube podcast video live, and yes, 12th of April 2025. 6 to 7 days are left, but yes, we are also looking forward to have lot of things. And just right now, I was about to start our YouTube live. So a known person, almost for let's say 2 to 3 years, we are seeing each other, and he was having a issue, especially with mesiodens on the, let's say, lingual side of the parietal side of the maxillary right central incisor, and just because of that extra tool, the परमानेंट वाला जो मैक्सिलरी टीथ है वो अभी पूरी तरीके से ग्रेड 2 मूवेबल टिप आ चुका है ड्यू टू द कांस्टेंट प्रेशर exerted by the tongue on the mesiodens and indirectly central incisor, and it's not looking very good aesthetically pleasant नहीं लगता when incisors procline हो या नीचे आ चुके हो, if they are mobile. He is finding some difficulty eating and drinking as well along with the aesthetics. So we are just planning to have something कि mesiodens को ही basically use किया जाए after extraction of the central incisor. So that is the thing we are just thinking. It's again a very hot day today. Hotter and hotter, no matter कुछ भी हो, हमारी एग्जाम चलती रहे या कैसा भी हो, just like get something out there. So yes, this is our motto, this is our tagline, this is what we do. We never stop reading. Okay. आई गेस मुझे लगता है कि डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करते हैं हम बेसिकली टू पीपल, नॉट जस्ट लेट्स से फॉर द फंक्शन, खाने पीने में तो वो चीज़ होगी, बट एस्थेटिकली प्लीजेंट जब लगना होता है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ हाय गिरिराज सिंह, वेलकम। भाई क्या कर रहा है? भाई अभी फिलहाल तो लाइव आ चुका है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, इट्स रैपिड रिवीजन टाइम। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि बहुत बार लोग कहते हैं कि लाइक डेंटिस्ट्री इज वेरी वेरी सैचुरेटेड एंड एज सच देयर इज नो स्कोप, देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज, बट पब्लिकली जब मैं सोचता हूँ तो एक अच्छे खासे पोजीशन पर रहता है कि कोई भी डॉक्टर, नॉट जस्ट लेट्स से डेंटिस्ट, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हो, नर्सिंग वाले हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जितने भी लोग हो, सो दे आर सिंपली जस्ट लाइक, कहते थे उनको अभी लाइक दे आर ऑलमोस्ट गॉड, ऐसे कहते थे, और हम कहते हैं कि रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशन कि जहाँ पे ओके मेडिसिन कुछ, जहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे डॉक्टर्स कस्टमर्स को गॉड कंसिडर करते हैं, और कस्टमर्स इवन जो डॉक्टर्स है, ठीक है, उनको गॉड कहते हैं। तो दैट्स अ वंडरफुल पार्ट ऑफ लेट्स से दिस नोबल प्रोफेशन। बाकी बिजनेस में मुझे लगता है कि ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक है, जहाँ पे पैसे की लेन देन होती है और बस वहाँ पे व्यवहार खत्म हो जाता है। बट मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्पेशली डेंटिस्ट या बाकी के डॉक्टर्स, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी कि जिन्होंने अब तक डॉक्टर्स पे, डेंटिस्ट पे, मेडिकल प्रोफेशनल्स पे ट्रस्ट रखा है, बिलीव रखा है, और दिस काइंड ऑफ जस्ट लाइक इस मोटिवेशन की और लाइफ में अच्छा करने के लिए, पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें। तो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन समथिंग। कुछ टॉपिक्स मैंने एक्चुअली क्रिएट किए थे,
for the rapid revision. And 12 अप्रैल है, so daily MCQ test 12th वाली, that is published on the Telegram channel. Quick Dental is the name. You can simply go on the app and search for the NEET MTS or Dental PSC, where you can find two different things. एक हमारा 1000 सब्सक्राइबर का एक ग्रुप है, चैनल है, सॉरी, it's named Quick Dental. Lot of resources regarding NEET MTS 25 and next Dental PSC, those are there. You can simply check out that. एक ग्रुप है बेसिकली, इट इज़ डेडिकेटेड टू द एस्पिरेंट्स, जितने भी डेंटिस्ट हैं जो PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर अक्रॉस इंडिया जहाँ पे भी वैकेंसीज निकल गई है, दे वांट, इफ दे वांट जस्ट लाइक गो इनटू दैट फील्ड, तो उनका लिए डेंटल PSC नाम से एक ग्रुप है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट टॉपिक शायद मैंने कुछ किया था, उसके ऊपर MCQ ऑलरेडी दे आर पोस्टेड, बट एक्चुअली उसका रीडिंग बाकी था. So that is thing. There is a metallic test after the application of stannous fluoride varnish, and that is a very fairly common thing. Usually harmless side effect होता है, simply test जो होती है वो metallic हो जाती है. But why it happens? Okay, that we are going to read right now. उसके ऊपर एक basically MCQ आ चुका है. So why metallic test occurs? So जो tin ion होता है SN positive. So stannous fluoride, which contains tin, which can interact with our taste buds, so creating a temporary metallic or even bitter taste निकलती है. And the reason for that is tin वाला ion. And also oxidation होता है वहाँ पे. So tin ions में oxidized slightly होता है oral cavity में, and after that थोड़ा सा taste perception alter हो जाता है. एंड इसकी जो सेंसिटिविटी होती है मेटालिक टेस्ट की, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल. सो सम पीपल हैव वेरी हाइटेंड काइंड ऑफ सेंसिटिविटी टू द कंपोनेंट, वाइल जो वार्निश होती है समटाइम्स उसकी वजह से नोटिसेबल भी बस हल्का फुल्का लगता है, पर ज़्यादा नहीं लगता. इट डिपेंड्स एंड इट्स नॉट वेरी हार्मफुल, बिकॉज फ्यू आवर्स में वो सबसाइड हो जाती है मेटालिक टेस्ट. सो ड्रिंकिंग वाटर, इवन लेट्स से रीजिंग माउथ जेंटली इफ इट्स अलाउड, so it can reduce that metallic taste sensation. If the test persists for more than 24 hours, so that is a thing to worry. Accompanied Shireen Shrine edits, hello, welcome to the YouTube live. I said hello Shrine edits. So बहुत बार stannous fluoride है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं along with the APF, जो एसिटिलेटेड फॉस्फेट जेल होता है, APF फ्लोराइड जेल जो होता है, कैल्शियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड, ओके, स्ट्रॉन्शियम, वो वाला, इन सभी चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वार्निश पे हो, मेडिकेटेड टूथपेस्ट पे हो. ओके, तो लेट्स रिवाइज दैट थिंग. ओके, कुछ केरीज की डिटेक्शन के लिए डाइज भी यूज़ की जाती है, तो उसके ऊपर भी लेट्स एक MCQ पूछा गया है. सो व्हाट इज दैट, तो वो पढ़ लेते हैं. डिफरेंट डाइज यूज फॉर caries detection. Okay, I hope everybody is in good health. समर जैसे मैं कह रहा हूँ काफ़ी बहुत ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है एवरीबडी, स्पेशली एस्पिरेंट्स को तकलीफ जाती है. सो डाइज विच आर यूज फॉर द केरीज डिटेक्शन, दिस इज द सेकंड MCQ वी आर गोइंग टू कवर राइट नाउ. सो बेसिक फुशिन है, जिसका बेसिकली कलर रेड होता है. इट वाज हिस्टोरिकली यूज्ड टू डिटेक्ट द केरियस डेंटिन. ओके, but it is right now discontinued in many countries due to the carcinogenicity. Okay, तो बेसिक फुशिन है, तो केरीज डिटेक्शन के लिए रेड कलर की डाई यूज की जाती थी. राइट नाउ इट्स नॉट अलाउड. आफ्टर दैट एक इरिथ्रोजिन रेड नंबर की 3 नंबर की होती है, वो उसका कलर रेड होता है, एंड वो यूज की जाती है टू स्ट्रेंथन नेक्रोटिक टिश्यूज एंड इवन प्लांट. So it is safe, erythrocin, and it is FDA approved, and it is used in various dental applications. Which one? Erythrocin. Then gentian violet is also a purple color dye. It also has an antiseptic property. Gentian violet. It is used for staining tissues, though less commonly used for caries detection. तो ये use नहीं की जाती, but basic fusion करी जाती थी पहले. Okay. After that, sodium fluorosin. तो नॉन इन्वेजिव अर्ली डीमिनरलाइजेशन अगर इसको चेक करना है, तो सोडियम फ्लोरोसिन इज द डाई, और नॉर्मली उसका कलर है येलो ग्रीन.
और वो फ्लोरोसेंस करता है अंडर यूवी लाइट। ओके, कौन सा रहा कलर? येलो ग्रीन ऑफ सोडियम फ्लोरोसिन। जो बेसिकली चीज है इसमें, बेसिक पुशिंग एंड जो अवॉइड की जाती है जेंडियम वायलेट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाली, सोडियम फ्लोरोसिन जो अंडर फ्लोरोसेंस येलो ग्रीन दिखती है। तो फ्लोरोसेंस बेस्ड अगर केरीज डिटेक्शन मेथड है तो उसमें डाई कौन सी यूज की जाती है? दैट वाज द एमसीक्यू। सो इट्स अ सोडियम फ्लोरोसिन। Yesterday we covered binding forces along with the endodontic conservative topics, with different types of matrices, matrix system which are used in different conditions. तो बहुत बार आइवरी नंबर 8, आइवरी नंबर 1 या टॉफल मायर या टी जो होता है वो एक रिटेनर लेस जो ये होती है उसमें लाइलर स्ट्रिप्स है, तो इसके ऊपर के एमसीक्यू बहुत बार क्या हो जाते हैं, पूछे जाते हैं बेसिकली। तो वो चीज़ हमने कवर करी थी। लेट मी जस्ट लाइक चेक समथिंग एल्स। और किस चीज़ों में बेसिकली वो सेलुलोज स्ट्रिप्स है वो यूज़ की जाती है, दिखती है वो बेसिकली एंटीरियर जब कंपोजिट्स में वी हैव टू आल्सो गिव अ लाइट, तो उसमें मेटालिक वाली या रिटर्नर लेस कुछ काम नहीं करेगी, बिकॉज कंटूर भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। लेट मी जस्ट लाइक हैव अ ड्रिंक, पानी पी लेता हूँ।
So I was just creating few of the topics जो मैंने MCQ में से पढ़े हैं. So let's start again. After finishing the different dyes which are used to detect the caries, carbamazepine या sodium fluorescein, different mechanisms they use, which one is avoided right now, which one is advised. So gingival hyperplasia इस पे MCQ पूछे जाते हैं. So let's see that what is that. So gingival hyperplasia basically it is the overgrowth or even thickening of the gum tissue, that is gingiva. So it may involve increase in the number of the cells, that is hyperplasia, or even size of the cells, that is hypertrophy. So it often results in swollen, enlarged gums that may cover a part of the teeth. Okay, तो ये चीजें देखी जाती है. So what are the different causes? So drug induced हो सकती है. So phenotine, which is used as an anticonvulsant, it can induce gingival hyperplasia. Immunosuppressants like cyclosporine, I am again repeating, immunosuppressant like cyclosporine, it can also create conditions like gingival hyperplasia, hypertrophy, and calcium channel blockers like nifedipine and amlodipine. So phenytoin, anticonvulsant, immunosuppressants like cyclosporine, and calcium channel blockers like nifedipine and amlodipine, they can also induce the gingival hyperplasia. Sometimes due to the poor oral hygiene, plaque buildup हो जाता है, inflammatory भी gingival hyperplasia होता है sometimes. In case of pregnancy, puberty or hormonal therapy, it can also cause gingival enlargement. And if there is a systemic condition like leukemia, okay, or even like vitamin C deficiency, तो multiple differential diagnosis gingival hyperplasia में किड्स स्पेशली ल्यूकेमिक उसमें अगर कंडीशन है तो वो चेकआउट करनी चाहिए. विटामिन सी डिफिशियंसी भी बच्चों में होती है कि लोकलाइज एक या दो जगह पे बेसिकली वो हाइपरप्लासिया दिखती है. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वाली होती है. दैट आई वाज हैविंग अ केस almost 6-7 years back. So there was a lady who was taking that medications along with some calcium supplements basically. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी वो ले रही थी along with the कैल्शियम सप्लीमेंट्स. तो अगेन आई एम सेइंग कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं था. शी वाज वरीड कि व्हाई द होल जिंजावा इज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक दैट. दांत बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं. लोअर इंसाइजर्स पे ज़्यादा थी उसको मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन पे, और उसको एक्चुअली जिंजावेक्टोमी ही एडवाइस करना था. बट द बेसिक कॉज ऑफ दैट वाज लेट्स से कि वो दोनों चीज़ें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी ले रही थी अलग में कैल्शियम सप्लीमेंट्स. ओके, दोनों चीज़ें. और हेरेडिटरी भी होती है. सो हेरेडिटरी जिंजाइवल फाइब्रोमैटिसिस इट इज अ रेयर बट अ स्लो ग्रोइंग ओवरग्रोथ होती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स पेनलेस, फर्म होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि जिंजाइवल एब्सिस कैन बी देयर, तो आप उसको सिंपली पाल्पेट करके देख सकते हो. वेयर इज लाइक फर्म नोडुल टाइप की है, सिमेट्रिकल है, वन साइडेड है, ओवरऑल है. दैट वाज द केस कि वो लोअर एंटीरियर जितने भी थे कैनन टू कैनन वहाँ तक ज़्यादा थी. तो लोकल उसमें फैक्टर एसेस नहीं था. एंड टेकिंग अ गुड केस हिस्ट्री अगेन जस्ट टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग कि यस शी वाज टेकिंग फ्यू ऑफ द ड्रग्स व्हिच कैन इंड्यूस हाइपरप्लासिया. So stopping those drugs with the let's say physician's consent, reducing the dose, they can suppress the severity. But if that is not possible, simply gingival जो overgrowth है उसको कट भी कर सकते हैं. Sort of surgery होती है वो. Because it can interfere with the let's say aesthetic, गंदे भी दिखते हैं वो. Chewing, speech इसमें भी तकलीफ होती है if they are on the lingual parietal side. और oral hygiene बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होती. ब्रश नहीं कर पाते जिंजाइवा ओवरग्रोथ हुआ तो. So properly clinical examination along with the proper medical and a drug history, not just like medical but for that particular systemic condition, whatever the medicine is actually patient taking, that is also important. So drug interaction, जैसे मैं फिर से कहता हूँ फार्माकोलॉजी पे इंटरमीडिएट 25 में 14 मार्क्स का रहने वाला है बेसिकली. काफ़ी उस पर वेटेज दिया गया है. तो अनदर थिंग कि कुछ घंटे पहले फार्मेक पढ़ सकते हो. बेसिक साइंस इसमें ज़्यादा स्कोर करना है तो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे है कि वो ज़्यादा पढ़नी डिटेल में नहीं पढ़ती, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बट फार्माकोलॉजी का एक रिवीजन एक्स्ट्रा रखती है.
फार्मेकोलॉजी के वन लाइनर्स रीडिंग इज अ वेरी गुड थिंग, वो शायद हम प्रोवाइड कर देंगे. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग सेशन, बस 10-15 मिनट में खत्म करने वाले हैं. सो अगेन बेसिक के तरफ बढ़ते हैं. सो व्हाट इज अ प्लाज्मा? सो इट्स अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड making up about, let's say, 55% of the blood volume. So 55% of the blood volume is let's say plasma. Okay, and it's a liquid component, and it is pale yellow fluid that serve as the transport medium for the cells and various substances during the thing. Okay, so water composition क्या है प्लाज्मा का? Almost 90 to 92% of plasma water होता है. It acts as a solvent and also maintains the blood volume and blood pressure. Okay, water inside the plasma. Proteins are there like albumin, globulin, fibrinogen और जैन होती है. 7 to 8% होते हैं proteins in the plasma. So albumin का function हमने पीछे भी देखा था. So it maintains the osmotic pressure. Okay, osmotic pressure ये क्या करता है? Maintain करता है albumin. Well, globulin उसका रोल क्या है? तो immune function में होता है basically antibodies. Fibrinogen हमें पता है, it is involved in the blood clotting. Plasma also has electrolytes, so sodium, potassium, calcium, bicarbonates वो भी होते हैं उसमें. They help in also, let's say, nerve function, muscle contraction, pH balance. Nutrients होते हैं प्लाज्मा में, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, and hormones which are nothing but just like secretion from the endocrine glands to target the organs. तो वो प्लाज्मा में वो भी होते हैं. Along with that, plasma also has urea, creatinine, bilirubin, and oxygen होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, even नाइट्रोजन in the dissolved form होता है प्लाज्मा में. Okay. So transportation, regulation of different pH, temperature, osmotic balance, protection होता है, antibodies होती है उसमें, buffer system की तरह act होता है. तो plasma is a very very important and crucial part of our blood liquid component. Okay. I know a lot of topics we already have covered. We are simply just rapidly revising. And मुझे लगता है कम से कम 1 या 2 दिन we are going to just let's say start with basic sciences again. I guess कि वो एक अच्छी strategy रहेगी कि वन लाइनर जो है फार्मेकोलॉजी वो भी हम शायद क्रिएट कर देंगे probably जल्दी से जल्दी.